Hello guys, welcome to my channel AI Math Zone. And today we will solve few important questions on relation. So let's start. And the first question is this one. A relation R1A is equals to XYZ defined by R equals to XY, YX so that R is symmetric but neither reflexive nor transitive. So that R is symmetric but neither reflexive nor transitive. First one is symmetric. R is symmetric. We will show that R is symmetric. Now see here. You know from the definition of symmetric, when a relation is said to be symmetric, if AB belongs to R implies BA belongs to R. Right? Now see here clearly XY belongs to R and YX belongs to R. Right? Therefore, R is symmetric. Right? Now we will show that this is neither reflexive nor symmetric. Sorry, not transitive. This one will be transitive. I am very sorry. This one will be transitive. Transitive. I'm very sorry. Okay. So next, reflexive. Reflexive होने के लिए क्या जरूरत होता है? For all A, मान लो कि R is a relation 1A, then X, X belongs to R for all X belongs to A. A के अंदर जितने सारे एलिमेंट्स है, वो सारे एलिमेंट्स को खुद के साथ रिलेट होना पड़ता है. So this is the definition of reflexivity, right? So now see here, there is no element as X, X, Y, Y, Z, Z, but R is on a relation. Is a relation on A. There are three elements, so it should contain X, X, Y, Y, Z, Z to be reflexive, but there is no element. Since X belongs to A, but X, X does not belongs to R, therefore R is not reflexive. Right? And next we will show that this is not transitive. Now see here. Also XY belongs to R and YX belongs to R. Now from the definition of transitivity, if a relation contains XY and YX, then it must contain XX. ये जो दो एलिमेंट रहता है मिडिल में वो दोनों सेम होना चाहिए, लेकिन ए वाला एलिमेंट लेके जो एलिमेंट होता है उसको रहना चाहिए, राइट? बट then according to the definition of transitivity, it should contain X, X to be transitive, right? But it doesn't. But X, X does not belongs to R, right? अगर ए एलिमेंट रहता तभी वो ट्रांजिटिव होता, लेकिन ए एलिमेंट है क्या R के अंदर? नहीं है. Therefore R is not transitive. And the next question is, R is a relation on R. See here, this is the relation and this is the set of real numbers. These two are not same, right? So R is the set of real numbers defined as A is related to B, both imply, or if and only if, this notation is if and only if B is divisible by A. हर एक एलिमेंट A B के साथ रिलेट रहता है अगर सेकेंड एलिमेंट is divisible by first element, right? Check whether R is an equivalence relation or not. चेक करना है कि क्या ये रिलेशन equivalence relation है कि नहीं. Now you know very well that a relation R is said to be an equivalence relation if it is first one reflexive, second one symmetric, third one transitive, right? So अगर ये तीनों कंडीशन के अंदर कोई भी एक वायलेट करता है तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होता है. लेट्स टेक एन एग्जांपल. Clearly see here, B is divisible by A. सेकेंड एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से डिविजिबल होना पड़ता है, राइट?
clearly 3 is related to 9 क्योंकि second element 9 is divisible by 3 but 9 is not related to 3 क्यों? क्योंकि देखो रिलेटेड होने के लिए सेकेंड एलिमेंट को डिविजिबल होना पड़ता है सो यहाँ पर 3 इज नॉट डिविजिबल बाय 9 राइट दैट्स व्हाई 9 इज नॉट रिलेटेड टू 3 मतलब 3 9 belongs to R but 9 3 does not belongs to R. That means this is not an symmetric relation. Therefore, R is not symmetric. Hence, R is not equivalent relation. So this is the answer. Right? तीनों कंडीशन को चेक करने का कोई जरूरत नहीं राइट कुछ गेस लगाओ कौन सा कंडीशन वायलेट कर सकता है अगर तुम्हारा गेसिंग पावर अच्छा है तो पहले दफा में तुमको मिल जाएगा अगर नहीं है तो चेक करके देखो कौन सा वायलेट करता है और अगर वायलेट नहीं किया तो इक्विवेलेंस रिलेशन ओके आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सो दैट द रिलेशन रो ऑन आर दिस इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स defined as rho is equals to xy such that x is less or equal to y is reflexive and transitive but not symmetric. That is, you have to show that R is reflexive and transitive, right? But not, this is reflexive and transitive, but not symmetric. लेकिन symmetric नहीं होगा. Now, let's prove that rho is reflexive and transitive. Since x is less or equals to x ये तो हम लिख सकते हैं x less or equals to x राइट क्योंकि यहाँ पर equals to साइन है तो वहां पर equals to साइन सेटिस्फाई कर रहा है and that's why we can write here x is less or equals to x therefore x comma x belongs to rho for all x belongs to R रियल नंबर के अंदर जितने सारे नंबर्स है वो सारे नंबर के लिए एक कंडीशन सेटिस्फाई करता है जब भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करता है तब भी एक्स एक्स एलिमेंट रो के अंदर रहता है एंड दिस शोज दैट दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्सिविटी राइट सो देयरफॉर रो इज रिफ्लेक्सिव सी द टेक्निक हाउ टू शो ए रिलेशन रिफ्लेक्सिव राइट नेक्स्ट वी विल शो दैट rho is transitive right now to show that rho is transitive what is the definition if AB belongs to R and BC belongs to R then this will implies that AC belongs to R अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई करता है तभी उसको हम ट्रांजिटिव बोलते हैं राइट so let AB belongs to rho see here the relation is rho so rho and BC belongs to rho जब भी ए बी बिलोंग करता है तब भी यहाँ का डेफिनेशन क्या दिया हुआ है फर्स्ट एलिमेंट विल बी लेस और इक्वल्स टू सेकंड एलिमेंट सो यहाँ से अगर ए एलिमेंट रो में बिलोंग करता है देन ए इज लेस और इक्वल्स टू बी एंड बी इज लेस और इक्वल्स टू सी राइट देखो ए इज लेस और इक्वल्स टू बी और b इज लेस और इक्वल्स टू c सो हम लोग क्या ये दोनों को जोड़ के नहीं बोल सकते हैं कि a इज लेस और इक्वल्स टू c मान लो कि तुम्हारा भाई तुमसे बड़ा है और तुम्हारा भाई से भी और एक बड़ा है तुम्हारा कजिन राइट सो क्या ये नहीं बोल सकते हो कि तुम्हारा कजिन तुमसे बड़ा है एग्जैक्टली सेम थिंग यू कैन डू दैट देयरफॉर A is less or equals to C. Therefore, A, C belongs to rho. Therefore, rho is transitive. Therefore, rho is transitive. Right? And next, we will show that this is not symmetric. So, जब भी तुम किसी को दिखाना चाहते हो कि this is not symmetric या फिर not transitive या फिर not reflexive, तब सबसे अच्छा टेक्निक है किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल ले लो और वो एग्जाम्पल को हाईलाइट करो डन राइट नाउ सी हियर इफ वी टेक 3,5
definitely it belongs to row. Clearly 3,5 belongs to row. क्यों? क्योंकि first element is less or equals to second element, but 5,3 does not belongs to row. ये belong नहीं करता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर first element क्या है? 5 and this is not less or equals to 3, right? Therefore row is not symmetric. Row is not symmetric. This is the answer, right? Going to the next. And the next question is, so that the relation R on Z, this is the set of integers, right? Defined by R equals to xy such that x minus y is an even number, right? And is an equivalent relation, right? So you have to show that R is reflexive, symmetric and transitive, right? So first one, R is reflexive. So reflexive, right? So reflexive के लिए क्या होता है? See, since x minus x is equals to 0 is an even number, therefore x comma x belongs to R for while x belongs to z. z के अंदर जितने सारे एलिमेंट्स हैं उस सारे एलिमेंट्स के लिए ये 0 होता है. That's why x belongs to R and hence R is reflexive. Therefore R is reflexive. Next, symmetric, right? So symmetric, R is symmetric. And see here, if x minus y is even, then definitely y minus x is also even. Let x y belongs to R, then x minus y is an even number. ए R का डेफिनेशन है. यहाँ पर जो रिलेशन दिया हुआ है, अगर कोई एलिमेंट उसके अंदर रहता है तो उसका जो डिफरेंस है वो इवन नंबर होता है. This is the definition of R given here in the question. From there you can write here. इसको मैंने consider किया और consideration के बाद according to definition of R you can write here x minus y is an even number, right? Implies that y minus x is an even number. अगर x minus y even number होता है तो हमेशा y minus x भी even number ही होता है. See here, 5 minus 7 equals to 2 as even number. अब चेंज कर दो, 7 minus 5, sorry, this will be minus 2 as even number, and this is equals to 2, also an even number, right? That's why x minus y even number implies y minus x is also an even number. Even number जब भी ये even number होता है तब भी वो किसके अंदर रहता है? R के अंदर, belongs to R. Therefore R is symmetric. Therefore R is symmetric, right? Next we will say that next one is R is transitive, right? So for transitivity, see here I am doing here transitive. So transitive का definition क्या था? अगर A B belongs to X, B C belongs to A B belongs to R and B C belongs to R, then A C belongs to R. अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई करता है तभी उसको हम ट्रांजिटिव बोलते हैं, राइट? सो let x y belongs to R and y z belongs to R, right? then जब भी x y belongs to R होता है तभी वो एक इवन नंबर होता है. then x minus y is equals to 2m, क्योंकि इवन नंबर होता है इसीलिए मैंने उसको 2m लिखा, राइट? सो where m is an integer, right? And y minus
z and y minus z equals to 2n, right? So and n is where n is an integer, right? Now n is an integer. अब चलो 1 और 2 को ऐड करते हैं. So if we add 1 and 2, then we will get y cancel. So x minus z equals to 2 times m plus n, right? क्योंकि ये दोनों इंटीजर है तो उसका एडिशन भी इंटीजर होगा. So 2 times इंटीजर एक इवन नंबर होता है और 2 into m plus n is even number. That means x minus z is an even number. Therefore x minus z is even. Therefore x comma z belongs to R. Therefore x comma z belongs to R. And hence इसके बाद यहाँ पर वो लाइन यहाँ पर लिखना कि hence R is transitive. So R is reflexive, symmetric and transitive. Hence R is an equivalence relation. Comma L1 L2 belongs to S, right? Then so that R is an equivalent, then R is not an equivalence relation. तुमको प्रूफ करना है कि R equivalence relation नहीं है. Is it symmetric? और R के symmetricity हम लोग टेस्ट करेंगे, right? So since any straight line is not perpendicular to itself, therefore L1 comma L1 does not belongs to R. For any L1 belongs to S. S के अंदर कोई भी स्ट्रेट लाइन के लिए वो खुद उसके साथ रिलेट नहीं रहता है, क्योंकि कोई भी स्ट्रेट लाइन वो खुद के साथ परपेंडिकुलर नहीं रहता है, right? So this one, therefore R is not reflexive. Therefore R is not reflexive. That is R is not an equivalence relation, right? और एक बार तुम लोग ट्रांजिटिव जो प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव से भी तुम लोग बोल सकते हो, क्योंकि ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, राइट? क्यों नहीं होगा? सी हियर, इफ वी टेक एनी थ्री लाइन, सपोज this one is L1, this one is L2 and this one is L3, right? Now see here, L1 and L2 belongs to R, क्योंकि L1 के ऊपर L2 क्या है? परपेंडिकुलर है. Again L2, L3 belongs to R, क्योंकि L2 के ऊपर L3 परपेंडिकुलर है, right? But L1 and L3 ये दोनों क्या है? पैरेलल है. That's why, but L1, L3 does not belongs to R. Hence this is not transitive. That's why the relation is not equivalence relation. लेकिन ये relation definitely symmetric है. क्यों? क्योंकि कोई भी लाइन अगर दूसरे किसी लाइन पर परपेंडिकुलर है तो वो लाइन भी इसके ऊपर परपेंडिकुलर है. Suppose this one is L1 and this one is L2. So L2 is perpendicular to L1 and vice versa. L1 is perpendicular to L2. ये भी हम लोग कह सकते हैं, right? So both are same. If L1 comma L2 belongs to R, then L1 is perpendicular to L2, implies that L2 is perpendicular to L1, implies that L2 comma L1 belongs to R. Therefore R is symmetric. Therefore R is symmetric, right? So this relation is not equivalence because it is not reflexive nor transitive, but this relation is symmetric. Okay, going to the next question, question number 6. Let R be a relation on n cross n. यहाँ पर नेचुरल नंबर के कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर यहाँ पर रिलेशन R is defined, right? So defined by AB is related to CD. यहाँ पर दोनों एलिमेंट को क्यों लेते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो रिलेशन R है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ n के कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर डिफाइंड है. That's why ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ये रिलेटेड टू अनदर ऑर्डर्ड पेयर रहता है. Just see this one, right? Okay, if and only if यहाँ का फर्स्ट एलिमेंट के साथ सेकेंड एलिमेंट को अगर जोड़ दो तो
या का सेकेंड एलिमेंट के साथ फर्स्ट एलिमेंट को जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आता है वो इक्वल होगा, राइट। सी हियर, सी द पोजीशन, these two we are adding these two and these two, right, these two will be equal। अगर a होता है तभी वो R के अंदर रहता है, right। so and you have to show that this one is an equivalence relation, right। so first one what is this, you have to show that this one is reflexive clearly। देखो हम लोग दिखाना चाहते हैं कि AB is related to AB, दिस इज आवर टारगेट, राइट। सो अगर इसको दिखाना चाहते हैं कि ए रिलेटेड टू आर है खुद के साथ, तो फर्स्ट एलिमेंट को जोड़ना है सेकेंड एलिमेंट के साथ और सेकेंड एलिमेंट को जोड़ना है यहाँ का फर्स्ट एलिमेंट के साथ। सो ऐसा क्या होगा, क्लियरली ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, राइट। कोई भी दो एलिमेंट ए और बी पर ए बी बिलोंग्स टू एन, नेचुरल नंबर के लिए हम लोग ये लिख सकते हैं, therefore AB is related to AB, therefore R is for all AB belongs to n cross n, this one, right। therefore R is reflexive, R is symmetric, right। so let AB is related to CD, this one, right। then you can write here A plus D is equals to B plus C, right। so अब हम लोगों को क्या दिखाना है, CD is related to AB। अगर A है कि CD is related to AB, then we have to show that C plus B is equals to D plus A, यही दिखाना है ना। you have to show this one, right। and from this one you can write here, this implies that B plus C is equals to A plus D, implies that ये दोनों को तो हम alternate कर सकते हैं, implies that C plus B is equals to D plus A, क्योंकि addition of natural number is commutative, so implies that C, यहां पर क्या लिख सकते हैं, AC, सॉरी हाँ डी ए तो होता है ना, राइट। सो implies that CD is related to AB, hence R is symmetric, therefore R is symmetric। next R is transitive, right। so let AB is related to CD, right, and CD is related to EF, then A plus D is equals to B plus C, and C plus F is equals to D plus E, right। so from this one implies that from this one D minus C, how much, from this one D minus C is equals to B minus A, and from this one D minus C is equals to F minus E, therefore D minus C यहाँ पर एक वैल्यू है, वहां पर भी एक वैल्यू है, तो दोनों से हम लोग क्या लिख सकते हैं, that D minus A is equals to F minus E, implies that हम लोगों को दिखाना है कि AB is related to EF, right। so you can write here is equals to B plus E is equals to A plus F, implies that A plus F is equals to B plus E, implies that AB implies that AB is related to EF, hence R is transitive, therefore R is transitive। so R is a relation on Z defined as R is related to B if and only if A minus B is divisible by 5, then R is, which one will be the correct one, right। तो चलो एक करके दिखाओ,
फिर ए, फिर ए, फिर ई करके दिखाओ ए, अब ए करके दिखाओ, चलो ए. So these all were the questions you have to solve. So thank you guys. Hope all of you have enjoyed my video. So लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना. चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही मजेदार वे में.